Hey everyone, welcome all of you to the deep dives. So in this particular part, I'll be covering the remote sensing part through some of the previous question that has been asked in the 2022 Assistant Geologist examination. So main objective is to understand all those theories related to that particular question so that we can easily apply all those concepts in the examination. Okay, so let's go to the question part. So this is the lecture number 9. Okay, remote sensing concept through the question. We will understand all those theories related to that particular question. Okay, so this is the question number 77 that has been asked in the 2022 Assistant Geologist. Let's read the question first. Okay, what will be the NDVI value if the value rate reflected radiant flux is 5 and the near infrared radiant flux is 45? Okay, so what do you mean by NDVI value? It is normalized difference vegetation index. Okay, first I calculate the problem, then we'll understand what is the exact meaning of the NDVI value. Okay, so the formula is or mathematical expression for calculating NDVI value is NIR minus rate upon NIR plus rate. Okay, so NIR means it is the reflectance value. Okay, NIR means the reflectance value in near infrared region है ना. नियर इंफ्रारेड रीजन पे रिफ्लेक्टेंस वैल्यू क्या है? सो दैट इज द NIR वैल्यू. रेड वैल्यू, सो रेड का मतलब है इन द रेड वेवलेंथ रीजन व्हाट इज द रिफ्लेक्टेंस वैल्यू. ओके, और रेडिएंट फ्लक्स वैल्यू. दैट मीन्स NIR रीजन पे कितना दिया हुआ है वैल्यू? नियर इंफ्रारेड रेडिएंट फ्लक्स इज 45. ओके, सो 45 minus in red region, that is 5, upon 45 plus 5. Okay, so 45 minus 5, it is 40 upon 50. Okay, so coming is 4 by 5, that means 4 by 5, 40 by 5, right? So it is coming to 0.80. Okay, the answer will be the A part, 0.80. So now we'll understand what is the exact meaning of NDVI value. ये NDVI value क्या है, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, नॉर्मली बिफोर जंपिंग इनटू द मेन NDVI concept, ना, so it is a simply index, that means a value. Okay, so it is a normalized. When we normalize the value, that means we compare in two regions, right? So the normalized difference vegetation index is a standardized index allowing you to generate an image displaying in greenness. Okay, so it tells about the vegetation index. Okay, ये vegetation index होता है क्या है? It tells about the health condition of vegetation. Okay, that means the healthiness of vegetation. Okay, whether the vegetation is higher or no, right? Or whether the vegetation is dry, or whether the particular vegetation is healthy na? So that tells about the NDVI value. Okay, जैसे मान लो कि डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, ब्लड चेकअप करने के लिए. Okay, you go to the hospital for the checking your blood. Suppose blood amount पे जैसे मान लो RBC काउंट, WBC काउंट है ना, जैसे क्रिएटिन काउंट होता है. Okay, so if the creatine amount is high in the blood cell, that means then doctor prescribe कि sir please reduce your protein content, right? So that is the exact meaning of the value
of creating in the plot. At the same march, जैसे मान लो NDVI अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि whether the vegetation is good or whether the vegetation is in the like bad, right? So that means the healthy vegetation or not, or the vegetation is typically dry condition, है ना? So index takes advantage of the contrast of the characteristic of two band. तो ये जो NDVI वैल्यू कैलकुलेट होता है ये टू बैंड पे नॉर्मली कैलकुलेट होता है. वन इज द नियर इंफ्रारेड बैंड, अनदर इज द रेड बैंड. ठीक है. So we normally calculate the different type of value in near infrared region or red infrared region. ठीक है. Then we compare each other. Then we calculate the index that is called the NDVI index. Okay. From a multispectral raster data set, the chlorophyll pigment absorption in the red band and the high reflectivity of the plant material in the near infrared band. Okay, let's consider it now, right? So actually ये कहाँ से पता चलता है आपको पता है? NDVI value can be calculated. आप पढ़े होंगे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व, है ना? स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ये पढ़े होंगे. और इट इज इन द ऑल्सो इन द GSI मेंस एज वेल. इट इज इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ NDVI वैल्यू. इसको अगर समझोगे देन यू अंडरस्टैंड द NDVI कॉन्सेप्ट, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स. ओके. स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो वाटर हो गया, सॉइल हो गया, है ना, वेजिटेशन हो गया. ओके. वाटर बॉडी हो गया, राइट. डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल हो गया. ओके. डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक हो गया. सो वी नॉर्मली study all those type of spectral response curve, right? Spectral response curve. So यहाँ से पता चलता है कि the vegetation is good or bad. To determine application क्या है NDVI का? NDVI का application is to check the health condition of vegetation or to determine the density of healthy vegetation. Okay. You can also write in the GSI mains examination if the question asked in the short note, जैसे NDVI का concept आ गया short note पे, you can write all those application and what is the exact meaning of NDVI. Okay. Okay. What does actually NDVI measure क्या करता है अभी बताया. It measures the greenness or health condition or healthy vegetation. Okay. Landsat normalized difference vegetation index is to quantify the vegetation greenness. What is the amount of greenness present in the vegetation that determines the NDVI value. So useful in the understanding the vegetation density and assessing the changes in plant health. Okay, so this is really important, or application you can say. So this is the application for the NDVI. NDVI क्यों मेजर करते हैं, क्यों जरूरत है, ठीक है. और NDVI का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व, ठीक है. और फॉर्मूले अभी बताए थे, कैसे कैलकुलेट करोगे. सो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू इन द NAR रीजन माइनस रिफ्लेक्टेंस वैल्यू इन द रेड बैंड अपॉन रिफ्लेक्टेंस वैल्यू इन द NAR addition to reflectance value in the red band. Okay, so NAR minus red band upon NAR plus red band. Okay, so this is the formula for the calculating of NDVI value. Okay, now go to next. So this, suppose a image is produced. From this image you can interpret, so this type of vegetation is really green vegetation, you know, green plant. That means the vegetation is, or the density of vegetation is heavy, right? It is green, so this is called the healthy vegetation. Okay, so this part if you look, so this is the dry plant, you know, dry plant, the condition is so dry. Okay, that means we normally interpret कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो condition है, whether the NDVI value is higher or lower. ठीक है, अगर NDVI value normally greater than 1, then it comes to
हेल्दी वेजिटेशन ना. अगर ज्यादा होगा NDVI वैल्यू, अगर कम होगा that means if the NDVI value will be less than 1, it is dry plant or a dry vegetation. Okay, because when you calculate no NIR minus rate by NIR plus rate, when you see the minimum value should be -1 है ना. मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है +1. ठीक है. सो अगर +1 और ग्रेटर देन 1 that means the condition of the vegetation is healthy. Okay, if it is the lower value that means NDVI value is less than 1, that means that it is completely dry. Okay, so this type of image you can produce. Okay, so this is the spectral reflectance curve for different type of object. It is concrete, dry soil, dry vegetation and healthy vegetation. ठीक है. Before going to the like main things, you know what is the visible region का wavelength क्या है. It is 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर है कि नहीं, और 400 to 700 नैनोमीटर. राइट. सो इट इज द विजिबल रीजन. सो 0.7 है ये रेड बैंड का है ना, ये रेड बैंड का है 0.7 तक, ये विजुअल रीजन का वेवलेंथ है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड मेमोराइज दिस पार्ट. ओके, ऑल दोस वेवलेंथ रीजन. एंड NIR रीजन का वेवलेंथ क्या है नॉर्मली 0.7 माइक्रोमीटर से 2.3 और 2.3 माइक्रोमीटर तक और 2.5. ओके, दैट मीन्स 700 नैनोमीटर से 2500 नैनोमीटर. सो इट इज द NIR रीजन. ठीक है. अगर आप देखोगे इस इमेज को देखोगे, ओके लेट मी इरेज दिस पार्ट. ओके, लुक एट द ड्राई वेजिटेशन पार्ट. ओके है ना, इसका ड्राई वेजिटेशन का रिफ्लेक्टेंस वैल्यू देखो एंड हेल्दी वेजिटेशन का. ओके, इफ यू लुक द हेल्दी वेजिटेशन, ओके, इफ यू लुक इन द इंफ्रारेड NIR रीजन पे अगर देखोगे, ठीक है, इफ यू लुक द इंफ्रारेड रीजन दैट मीन्स फ्रॉम दिस पार्ट, दैट मीन्स इन NIR region, let me erase this part. What do you observe in the NIR region and red region पे. ठीक है, क्या ऑब्जर्व करते हो इस रेस्पॉन्स कर्व को देखने से पता चलेगा आपको. ठीक है, let me erase these all those things so that we can understand properly. Okay, okay, my pen got hanged. Okay, let just wait some more minutes so that my pen is not responding. Let me wait some more minute. Okay, so let's look at this particular part. Okay, ये healthy vegetation और dry vegetation. Okay, ये देखो, suppose in NIR region, okay, healthy vegetation अगर देखोगे तुम this particular part reflect more, yes or no, if you look at the healthy vegetation part, okay, in compared to dry vegetation.
अगर ड्राई वेजिटेशन को देखोगे इट रिफ्लेक्ट्स लेस देन द हेल्थी वेजिटेशन इन एन एयर रीजन, है कि नहीं? In comparison to the dry vegetation, the healthy vegetation reflects more. That means in an air region, the reflectance value of healthy vegetation, okay, reflectance value will be more than the dry part, okay, same much. Now comes to this part 0.7 to 0.7. If you look in the visible portion, dry vegetation reflecting more than healthy vegetation. See, in this particular part, so this is the healthy vegetation part, so and this is the dry vegetation. So dry vegetation reflects more than the healthy vegetation. Am I right or wrong? In the visible portion, है ना? In visible portion. Okay, in visible portion, the dry vegetation जो है, so it reflecting more than the healthy vegetation in visible part. But at the same time, in an air part, healthy vegetation reflect more than the dry vegetation. Okay, so from this interpretation, we normally calculate the NDVI index. Okay, so NIR minus rate open NIR plus rate. Okay, so this is the formula, reflectance value in the NIR region and rate region. Okay, so see, so this is the green plant, that means this is the healthy vegetation, okay, and this is the dry vegetation. See, सूखा पत्ता है ना, dry vegetation, yellow plant. If you see in the NIR region, near infrared region, in dry vegetation it reflects more, around 50%, है कि नहीं? And in visible region it reflects less than the yellow plant. Yes or no? अगर ये कंपेयर करोगे 50% वैल्यू इन द NIR रीजन, किसका? हेल्दी वेजिटेशन का, है ना, रादर देन 40% वेजिटेशन किसका? NIR रीजन पे ड्राई का. सो ड्राई पे NIR रीजन पे कितना है? 40% है. Yes or no? But in the green plant, that means healthy vegetation, reflectance will be higher, 50% in NIR region. But in the red region, yellow plant का, that means the dry vegetation का, reflectance will be higher. See, reflectance will be higher. Yes or no? Compared to the dry vegetation. ठीक है? और green plant, healthy vegetation. So we can calculate this type of index. जैसे 50% in NIR, that means 0.5, in 8% in red, that means 0.08 value, by 0.5 plus 0.08, it comes around 0.72. The value will be 0.72. Okay, so NDVI is calculated from the visible and near infrared light reflected by vegetation. Healthy vegetation absorb most of the visual light, है कि नहीं? It reflects large portion of the NIR. ठीक है, ये ज्यादा NIR region पे reflect करेगा. Okay, hope so you understand all the NDVI concept. Okay, now comes to this part, question number 78. So what is the representative fraction scale of a vertical aerial photograph on which a 66 feet long dike is measured as 0.4 inches? ठीक है, so before jumping into this question, first tell me what do you mean by scale? Scale क्या है? Let me add some more point. ठीक है, scale. So वो जैसे सुना होगा आपने 1:30,000 scale और 1:50,000 scale, है ना? इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? सपोज ये ले लो मैप और ये आपका रियल वर्ल्ड है. ठीक है, एक्चुअली स्केल मीन्स क्या?
So 1:30,000 scale means one unit measurement on map equal to 30,000 unit on the ground. Okay, so that means this is the map distance है ना, and this is the actual ground distance. Okay, समझ में आया? Suppose in map, जो geological mapping करते हो जब, you refer to the topo sheet, right? Topo map, geological map. So in map, suppose there is a road. So this is the road. Okay, road का suppose length है 2.5 किलोमीटर in map. Okay, scale means, so this 2.5 kilometer is how much distance in the real world. So that is the main concept of the map. Okay, so hope so you understand. Now comes to this particular part, question now. ठीक है, so question क्या पूछा है, what is the representative fraction? We'll come to this. Okay, of a vertical aerial photograph. So map की जगह यहाँ पे फोटो ले लेना, ठीक है. So this is the photograph. Okay, because in photograph we measure the RF representative fraction or photo. So RF को बोलते हैं photo scale, RF को बोलते हैं photo scale. Another term is PSR. It is called photoscale reciprocal. Okay, so photoscale reciprocal is the inverse of representative fraction. ठीक है, ये जो terminology है, so this type of terminology is only applicable for the interpretation of the photograph. Okay, so इसलिए मैं पूछा. So photograph and real world. वो क्या पूछा है, suppose a 66 feet long dike है, वो कहाँ है? Suppose there is a, okay, so suppose there is a dike. So dike का length क्या है? 66 feet in real world. Okay, measured as 0.4 inches in the photograph. ठीक है, 0.4 inch. Let me. So फोटो पे वो लेंथ है 0.4 इंच, बट एक्चुअल रियल वर्ल्ड पे डाइक का लेंथ है 66 फीट. ठीक है, तो वो क्या पूछा है, अगर 0.4 इंच is equivalent to 66 feet, then what is the exact value of 1 inch? है ना, जैसे मान लो स्केल क्या बोलता है, 1:50,000, राइट. सो 1/50,000 है ना. सो 1 यूनिट को आपको लाना ही पड़ेगा. ठीक है, क्लियर. जैसे मान लो, फिर से बोल रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. सपोज ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ पे लेंथ कितना है डाइक का, 0.4 इंच. ओके, एक्चुअल रियल वर्ल्ड पे कितना है, वो 66 फीट. ओके, ये रियल वर्ल्ड है. दैट मीन्स इन ग्राउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड. ग्राउंड पे सपोज एक डाइक है जिसका लेंथ है 66 फीट. ठीक है, वो पूछा है 0.4 इंच इज इक्विवेलेंट टू 66 फीट. इसको भी सेम यूनिट पे लाओ ना, क्योंकि मैं क्या बोला, 1:50,000. दैट मीन्स 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू द 50,000 यूनिट. द यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम ऑन द बोथ साइड. सो 0.4 इंच का जो डाइक है फोटो पे, वो कितना इंच होगा ग्राउंड पे, 66 इंटू 12 है ना, 66 इंटू 12 इंच इन ग्राउंड. am I right or wrong? So 66 इंटू 12 ये कितना आएगा एग्जैक्टली, सो 792 इंच it will come. So that means 0.4 इंच का जो डाइक है फोटोग्राफ पे, 0.4 इंच इन फोटोग्राफ, that is equivalent to 792 inch in the ground. Okay, then 1 inch कितना होगा, 792
by 0.4 in, it will comes to right 1980 ना, 1980 इंच आएगा, 1980 इंच आएगा। तो RF कितना हुआ 1 by 1980, ये सब नो 1 by 1980 है ना। So RF is nothing but the scale. It is same as the scale, but terminology is used for the photograph है ना। जैसे मान लो वहां पे स्केल यूज हो रहा था फॉर द इमेज और जियोलॉजिकल मैप और टोपो मैप, ठीक है। एंड RF एंड PSR is the photo scale reciprocal. So it is the PSR. Let me add some more. So PSR क्या होता है, फोटो स्केल रेसिप्रोकल. सो इट इज द इनवर्स ऑफ RF है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. और RF को क्या बोलते हैं, फोटो स्केल बोलते हैं. ओके, सो वी कैन राइट द PSR इक्वल टू 1 by फोटो स्केल ऑल्सो, PS. ओके, scale and height measurement on a single vertical aerial photograph. So photo scale, the ratio of distance between corresponding points on photograph and on the ground. अभी बताया, suppose ये photograph है, okay, and ये real world है. Okay, the ratio of distance between corresponding point on a photograph और map, इसको बोलते हैं map भी, वही बोला ना, same as the map. सो मैप पे ये स्केल होता है, फोटोग्राफ पे ये टर्मिनोलॉजी RF होता है, ठीक है. स्केल कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फोटो स्केल रेसिप्रोकल एंड इक्विवेलेंस. ओके, सो RF इज यूज्ड फॉर द फोटोग्राफ, अभी बताया था RF फोटोग्राफ के लिए यूज होता है. फोटो स्केल रेसिप्रोकल PSR जो बोलते हैं, सो PSR क्या होता है 1 by फोटो स्केल. ओके, सो दिस इज फोटो स्केल. It is the inverse of the photo scale, okay, or inverse of representative fraction. So PSR भी यूज होता है फोटोग्राफ के लिए, RF भी यूज होता है फोटोग्राफ के लिए, इक्विवेलेंस यूज होता है मैप्स के लिए, ठीक है. What is the equivalence? It is the same as the scale, है ना, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस स्केल, ठीक है. That means ratio of, it is the ratio of distance on a photo to the same distance on the ground. The unit can be different. जैसे मान लो 4 inch is to 1 mile equal to 1 mile है ना, जिससे सुना होगा 1 inch equal to 1000 feet. So this is like that only. So ratio of distance on a photograph to the same distance on the ground, ठीक है. So photograph पे जो distance है, suppose AB, ये distance है photograph पे, वो ground पे real world पे कितना distance है, AB का distance, what is the distance of AB, same distance है ना, same unit कितना है, AB का distance real ground पे कितना है. So that is the equivalence. Okay. The scale of the aerial photograph may be expressed as verbal scale or representative scale. So verbal scale मतलब क्या है? For example, जैसे मैं बोलूँ, suppose मैं बोलूँ कि 1 inch on aerial photograph, जैसे बोलूँ aerial photograph, ठीक है, represent, ठीक है, 2000 feet, ठीक है, on ground. So 1 inch on aerial photograph पे 1 inch is equivalent to the 2000 feet on ground. So verbal scale पे कैसे लिखूंगा, verbal scale पे 1 inch equal to 2000 feet, okay, but in representative fraction, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पे कैसे लिखूंगा 1 by 2000, ठीक है. एक्चुअली ऐसे भी नहीं लिखूंगा, वी हैव टू कन्वर्ट द फीट इनटू इंच, राइट. सो 2000 feet, 1 feet equal to 12 inch, so 12 into 2 24,000.
इसको सेम यूनिट लाना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इज a ratio, right? It is a ratio. The ratio should be in the same unit. So 1 by क्या लिखूंगा, 1 by 24,000. So it is the correct way of writing in the RF. ठीक है, clear? Hope so you clear. So RF पे होगा 1 by 24,000, but in the verbal scale, so 1 inch can be written as equal to 2,000 feet. Okay, in verbal scale. So this is the aerial photograph. And also RF, so suppose this is the aerial photograph. Okay, suppose this is the ground. Okay, so ये terrain है, ground है. So this is the lens. Okay, lens is here, and from lens this is the focal plane or film is there. Okay, film का मतलब क्या है? Film का मतलब it is a sensor, right? It is a sensor. So focal length क्या है? Focal length, it is a focal plane or film, it is a sensor. So focal length is the distance between the camera lens and the digital sensor or film, you can say. ठीक है, so यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है and this is a lens. So this distance is called focal length or small f. Okay, and if you see the angle of coverage, see it is an angle of coverage. Okay, the angle of coverage gradually increases as the focal length decreases. देखो, if you reduce the focal length, the angle of coverage should increase, right? So angle of coverage increases as the focal length decreases. Okay, so this is the focal length and this is the height. Flying height is called flying height. So RF also can be represented as, क्या लिख सकते हो? एक तो लिख सकते हो फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ये लिख सकते हो RF. और क्या लिख सकते हो सेम टाइम? लेट मी ऐड. ओके, पहले RF क्या हो गया आपका? फोटो डिस्टेंस ओपन ग्राउंड डिस्टेंस, ये सुनो वहां पे. And also RF can be written as focal length of the camera lens, ठीक है, f small f by flying height above terrain. So it is h. So flying height by h you can write. Same as अगर PSR एक लिख सकते हो 1 by RF. So PSR is, remember है ना, photo scale reciprocal. एक लिख सकते हो 1 by RF और 1 by photo scale लिख सकते हो 1 by photo scale PS. और इसको क्या लिख सकते हो? h by f है ना. h is the flying height upon the focal length. Okay, hope so clear. ये okay, so this is the focal length and height. height मतलब क्या है पता है? एक्चुअली height का मतलब क्या है? flying height distance between the camera and the ground. Okay, so this is the camera, not this. Okay, so this is the h part. Okay, next go to the this. What is the representative fraction scale? अभी बताया था 66 feet, same as 0.4 inch. अभी बताया था, आंसर will be 1 by 1980. Photo scale by ground distance or photo distance by
नॉट फोटो स्केल, इट इज फोटो डिस्टेंस, है ना। सो 0.4 इंच इज इक्वलेंट टू 66 फीट। अभी बताया था आरएफ के लिए आपको सेम यूनिट लाना पड़ेगा। 1 फीट इक्वल टू 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, 66 फीट इक्वल टू 66 into 12 inch, so 66 into 12 792 inch, so it is 0.4 inch जो फोटो पे है equal to 792 inch in ground, so 1 inch will be 792 by 0.4, it will come to 1980, so 1 by 1980 RF will be okay. Hope so clear. Let's go to this question. So this is the last question. A ground surface lying at an average altitude 500 meter above mean sea level. Suppose mean sea level is this. Suppose this is the, let me, okay, suppose this is the mean sea level. A ground surface lying at an average altitude of 500 meter. The ground surface is above mean sea level. ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल एज हैज बीन फोटोग्राफ विथ ए 155 mm फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सपोज ये हो गया आपका लेंस, है ना, यहाँ पे फिल्म लगा हुआ है, तो दिस इज द फोकल लेंथ, ये सुनो। सो दिस इज द लेंस, ओके, image can be, so this is the angular image और angular coverage. so focal length दिया हुआ है 155 mm, okay. aerial camera from 2000 meter flying height, so flying height दिया हुआ है, एज दिया हुआ है 2000 मीटर, ओके। focal length दिया हुआ है 150 मिलीमीटर एंड दिस हाइट दिया हुआ है, so this is the ground distance, है ना। so this is the from the mean sea level to the height, okay, mean sea level to the height. so ये जो हाइट दिया हुआ है, एज क्या हुआ दिया हुआ है, so एलिवेशन दिया हुआ है, एलिवेशन ऑफ टेरेन, ओके, above mean sea level, ये हाइट दिया हुआ है। so we have to subtract this, right, so this is the flying height, है ना, flying height दिया हुआ है, small h दिया हुआ है, so what is the scale? scale will be focal length, we have to subtract this part for the mean sea level part, na, a by h minus a. let me add some more point, जैसे मान लो कि mean sea level दिया हुआ है, ये ग्राउंड है ना, यहाँ फिल्म लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, ओके, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है स्मॉल f, ओके, फ्लाइंग हाइट दिया हुआ है एंड दिस एलिवेशन दिया हुआ है, स्मॉल h दिया हुआ है, कितना, फोकल लेंथ 150 mm, so focal length will be 150 mm, okay, flying height will be 2000 meter, flying height will be 2000 meter and it is 5000 meter, 5000 meter, 500 meter, okay. तो सबको सेम यूनिट पे पहले कर दो, ये मीटर दिया हुआ है, ये मीटर दिया हुआ है, ये मिलीमीटर दिया हुआ है, सो स्केल विल बी फोकल लेंथ ओपन हाइट, ये सब्ट्रैक्ट करना होगा h माइनस स्मॉल h, बिकॉज दिस इज द मीन सी लेवल से डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस, है ना, ये मीन सी लेवल है, ये ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड है, सो ये जो डिस्टेंस है ये वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, ओके। सो फोकल लेंथ 150 mm, ओके, फ्लाइंग हाइट विल बी क्या होगा, 2 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3, yes or no, because 2 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 मिलीमीटर के लिए, ये क्या होगा 5 into 10 to the power 2 into 10 to the power 3 मिलीमीटर के लिए, है ना, सो माइनस 5 into 10 to the power 2 into 10 to the power 3, तो क्या होगा 150 mm हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power 6 माइनस 5 into 10 to the power 5, ये भी मिलीमीटर में हो गया, है ना, मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसल, 150 बाय, अगर 10 to the power 5 लोगे
right? 10 to the power 5 common, so 20 minus 5. Okay, so 150 by 10 to the power 5 into 15, so 15 cancel, so it will come to 10 by 10 to the power 5, 10 to the power 4. So scale will be 1 is to 10 to the power 4. Okay, 1 is to, okay, 10,000. So answer will be 1 is to 10,000, this part. So answer will be this part. Okay, hope so you really like it. That's all for the video. So in the next part I will solving more remote sensing question, and some of the question concept I will tell about this. जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया ना, electromagnetic wave हो गया, all those terminology, frequency, wavelength, all those laws related to the EM spectrum, that I will discuss through the concept only. Other way I will tell the remote sensing like theory also you can go. Okay, so that's all for the video. Hope so you really like it. If you really like the content, please like it and share it and subscribe to the channel. Okay, so that it will reach to the maximum student, and maximum student will really add some value in the examination. Okay, hope so you really like it. Thank you so much.